Yeah. Hi guys, what's up? I hope you can hear me. So, welcome all of you to this course. And yesterday, also last night, we were discussing about how to make high quality notes and gave you some examples of my notes also, how to go about it, etc. So, let us get started on this Sunday morning and make the best out of it. All right. So, we have covered a lot of important topics. And let us get actually started with our environment and ecology. अभी तक काफी माहौल बन चुका है. So now is the right time to get actually started with some ecology, some ecosystem. और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं. जैसा कि आपने अगर लास्ट 2-3 साल के प्रीलिम्स अगर देखे हो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रखे हैं, राइट? Isn't it? And indirectly तो खैर entire environment is based on this. So the basics. So yeah, otherwise you will not be able to understand many things which like they keep on popping up in the newspaper. All right. So if everyone has joined, we can get started right away. तो चालू करते हैं आज का कार्यक्रम. So today we're going to discuss about basics of ecology and ecosystem. So this is the best way to utilize a Sunday. In my time, like me, my friends, we used to be very lazy. अरे यार Sunday है, चल मारते हैं, right? But now it's so easy for you guys to basically prepare कि संडे को उठते ही अभी आप उठे होगे 5 मिनट पहले और यहाँ पे वो पढ़ाने लग गया, राइट? सो इट जस्ट एनफोर्सेस थिंग्स, राइट? इट्स लाइक कि यू विल नॉट बी एबल टू लेट्स से गो टू जिम, बट कोई ट्रेनर ही घुस जाए आपके पास और बोले कि एक्सरसाइज करनी है. So that is a different thing altogether. So you don't understand that, but if you really want to study now, you have, like Pranjal is saying, no excuses. Anyway, so basics of ecology and ecosystem. By the way, these are two different concepts altogether. All right, ecology and ecosystem. Many people don't understand the difference between the two. So we will discuss today about ecology and ecosystem. So ecology definition, ecological organization, ecological succession, and biotic interaction. ठीक है? So first of all, you talked about Hippocrates, Aristotle. Ecology term was first coined in 1869, exactly 150 years ago. So it is not an old science. Is it absolutely clear? मतलब it's not like physics, chemistry, biology, which is going on for last thousands of years. All right, it's a very fresh science. So that is the number one point. It's like psychology. अगर आपने किसी ने भी psychology पढ़ी है, तो it's very new. It is just 200 years old. That's it. Okay. So these are all new sciences which have come up. Okay. So oikos मतलब होता है home और logos का मतलब होता है study. Is it absolutely clear? So oikos मतलब होता है home, logos का मतलब होता है study. So study of your home or study of your environment or study where you live or study how you live. So that will cover under ecology. And the term was coined by German biologist Ernst Haeckel. Very important name, Ernst Haeckel. कभी पूछ लेंगे directly that who pioneered the ecology concept. So answer is Ernst Haeckel. All right. Now, though it is as a science, it is studied for last 150 years. But if you go for ancient India, our religion, our dharma is not religion, by the way. So religion, dharma, all these are organized according to the environment, right? You go to Jainism, Buddhism, ancient Hinduism. So it is quite, your life revolves around environment. अगर आपने कभी भी basic पढ़ा हो, ये जिस तरह के rituals होते हैं, so they always take care of the environment. Okay. So Ved, Sanhitas, Brahmanas, Aranakyas, so they, yeah, dharma and religion are very different concept. Okay. So a lot of people get confused in these two. So they are not, they are different. Okay. So dharma is like a code of conduct. समझ रहे हो? जैसे विनय पिटक होता है बुद्धिस्ट के लिए. So it is just a code of conduct how you should have to live your life. It has nothing to do with religion per se. Okay.
So it is also known from treaties like Charak Samhita, Sushrut Samhita, etc. So let's say even if I don't belong to a particular religion, I can still follow dharma. Okay. So dharma is like a code of conduct, a way of life, what you have to do, uh, what is the right thing to do. It's like an ethical code of conduct. समझ रहे हो? What is your duty? What is your responsibility? So that is called as a dharma. Okay. सो ये काफी इसमें आर्ट एंड कल्चर में फंसा देते हैं आप लोगों को. धर्म इज नॉट रिलीजन पर से, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ कोड ऑफ conduct, it is your duties, it is your responsibilities, it is a set of ethical guidelines which are given to the individuals to perform in the society in a given role. Okay. So these texts basically classified animals also on the basis of habit, habitat, land in terms of soil, climate, vegetation. Charak Samhita also contained information about air, land, water, seasons, etc. So इससे ये तो क्लियर हो गया कि एंशियंट इंडिया में it is quite clearly mentioned about the environment and ecology. You can clearly see here, right? Though it was not studied as a scientific discipline, but yet it is quite evident from the things which I am discussing here that in ancient India there was a decent enough uh, awareness about these things. So this is the limited point which we are trying to make. Now, ecology is nothing but scientific relationship of living organisms between one another and the environment. Is it clear? Scientific study of relations or interactions or any kind of interrelation between living organism and their environment. Okay, समझ में आ गया point? So it is quite simple, quite obvious, it is not at all complicated. So scientific study of relationship of living organisms with each other, with their environment is called as ecology. Very, very simple, very, very obvious, right? Scientific study of relationship of living organisms with each other and their environment. So Roman saini interacting with a cow is also an example of ecology, and Roman saini interacting with the cold environment of Delhi is also an example of ecology. Or cow interacting with grass is an example of ecology, and cow interacting with the let's say hot weather of Rajasthan is also an example of ecology. Is it absolutely clear? Cow eating grass is an example which will cover under ecology. What is the relationship between cow and grass? So cow is a consumer of grass. Both are living organism. Grass is a primary producer. It's an autotroph. Cow is a herbivore. It is a secondary producer, a primary consumer, and it is dependent on grass to live. Okay. But cow also interacts with the environment, and environment will change the cow, right? So I don't know if you know it or not, but जैसे ऑस्ट्रिच देखा है आपने? ऑस्ट्रिच, हैव यू हर्ड अबाउट ऑस्ट्रिच? सो ऑस्ट्रिच इज नॉट योर टिपिकल बर्ड, राइट? छोटे छोटे बर्ड होते हैं हमारे टिपिकल, बट ऑस्ट्रिच कैन रन एट 70 किलोमीटर पर आवर. द मेल इज ओवर 2 मीटर टॉल, 7-8 फीट का होता है, और 120 किलो का बर्ड होता है. कैन यू बिलीव इट? ओके. तो 120 किलो का, 2 मीटर का, 7 फीट का, जो 70 किलोमीटर पे भाग रहा है, मतलब डर लग जाएगा ना. सो इट्स नॉट कैन डैमेज ह्यूमन, इट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइक एनीथिंग. चिथड़े उड़ा देगा आपके अगर मतलब आ गया सामने. बट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम बट बिकॉज. सो कैन यू इमेजिन 120 किलो का, 8 फीट का, 7 फीट का पक्षी भाग रहा है 70 किलोमीटर की स्पीड पे. How does it happen? Because it cannot fly. Is it clear? Because it cannot fly, so that is why it has to have such kind of adaptation where it can run so fast. Okay. So because of its environment, it, and now it will also change its environment. Okay.
So this organism will change its environment. Okay. एक पक्षी हुआ करता था, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट. सो न्यूजीलैंड में आज से 700 साल पहले एक बर्ड होता था, उसका नाम होता था मोआ. ओके. एंड दैट यूज्ड टू बी 230 किलो. ओके, 700 years ago I'm talking about. Can you imagine? 230 kilo का bird, moa, huge bird, but it was killed because of it was a flightless bird. Obviously 230 किलो का है तो उड़ना मुश्किल होगा थोड़ा. But can you believe it? There was a eagle which used to kill it. Okay, so it's called as horned eagle. इतना बड़ा ईगल, कैन यू इमेजिन? एक ईगल, इतना बड़ा ईगल आ रहा है और 230 किलो के बर्ड को उठा के लेके जा रहा है. And this is like not science fiction. This was just 700 years ago. But now listen to this carefully. Because Moa was killed by the Maori. Maori पता है आपको? Like they can ask you this question, where are Maori people? So Maori people are in New Zealand. Okay. So they went to New Zealand about 700 years ago. And Haka dance भी आपने कभी देखा हो उनका, तो that is inspired by Maoris only. Okay. So if they ask you, indigenous people बोलते हैं ना, aboriginals ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, Maoris are in New Zealand, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है. सो ये अलग से क्वेश्चन बनता है, so please remember this, where are Maoris, where are aboriginals, etc. So this eagle got extinct not because human beings killed it, because they killed its prey. ये बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ. बिकॉज हम सारे मुआ खा गए मार के, बिकॉज वो 230 किलो का फ्लाइटलेस डिफेंसलेस बर्ड था. सो जो हास्ट ईगल था ये भी डिलीट हो गया सिस्टम से. समझ में आ गया? बिकॉज इसको वो वही तो खाएगा, ये कोई घास फूस थोड़ी खाएगा, कीड़े तो खाएगा नहीं. इफ इट इज यूज्ड टू ईटिंग 200 kg, then it will die very fast. So this is a typical example of ecology where you are dependent not only on other living organism but you are also dependent on your environment. Now environment का example देते हैं. आपने सुना होगा वूली मैमथ के बारे में. It just used to extinct a few thousand years ago. It went extinct because ice age got destroyed. It was very suitable and adaptable to the ice age. But जैसे ice age खत्म हुई, environment got changed, so this organism could not survive because of the change in environment. Okay. Other things, let's say आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, but I hope it is clear. So it is cow with grass and cow with Rajasthan heat. So both of them are involved in ecology. आज के बाद definition गलत करके आए तो बहुत बुरा लगेगा मेरे को, ठीक है. Relationship of living organism with each other and their environment. Also interaction among organism and their environment. Okay. So इसमें सब कुछ आ जाएगा. Biodiversity, distribution, biomass, population, cooperation, competition, सब कुछ. Now there are different forms of study of the form, physiology, behavior, distribution, adaptation. So study of interaction between populations and intra-specific relations. We'll just cover all of this. You don't have to worry about it. ठीक है. So अगर पढ़ते हैं. Now what is environment? See, environment is technically a dead entity. But that is a wrong statement. It is basically made up of lot of non-living elements and living elements. ठीक है. So don't use dead elements for abiotic. ठीक है. Let's say if I die today, then I will be a dead body, right? But I was, for being a dead body, I need to be alive sometime, right? But the rock, the water, the salt, the heat, it is always abiotic. It is not dead. ठीक है. So आपको पढ़ाते थे बचपन में, there are two types of entities. One is living, one is dead. तो वो गलत है, ठीक है. One is living and one is non-living. So dead तो वो होगा जैसे if I die today, then I'll become a dead body. So then you can say this is a dead organism. So environment may be defined as surroundings or conditions in which an organism lives or it operates. And environment includes living and non-living components like biotic and abiotic components. All the organisms depend on their environment for survival. Okay. Each and every organism, what it does is it depends on its environment for the survival. All right.
So it is hopelessly dependent on the environment for survival. If the environment changes, then the organism will not exist. That you have my word, sir. Okay. It is impossible for the organism to exist if there is an issue in the environment. Now, every living organism is interacting with its environment, made up of air, light, water, land, substrate, various kinds of living organisms. Okay. So this is what environment is made up of. And if environment changes, then you have to change. So either you can, let's say UPSC is an environment, right? Typical example is UPSC. So 2011 mein environment made a change, and then CSAT paper 2 was introduced, right? So if those organisms who could not survive CSAT, they went extinct from UPSC, right? Those organisms who could not survive this change, they went extinct from UPSC. Now let us say again 2013 mein UPSC as an environment change. So they introduced ethics paper, they introduced like different papers, पूरा GS paper 1 2 3 4 डाल दिया उन्होंने. They removed one or optional. So again the environment changed, right? Now you can be like me and other toppers who can adapt to the changing environment, or you will go extinct, right? So tomorrow again UPSC can remove, UPSC can react in 2020, and let's say it removes the optional. So a lot of people will start cribbing, complaining कि मैं तो पिछले 1,500 साल से ऑप्शनल पढ़ रहा था, अब हटा दिया, राइट? पिछले 700 साल से मैं कोचिंग ले रहा था इसकी और अब हट गया. काफी कॉमन कंप्लेंट होती है लोगों की. बट एनवायरमेंट डज नॉट केयर अबाउट दिस. डू यू अंडरस्टैंड? वूली मेहमत बोलेगा मैं तो हजारों साल से ठंड में रहने की कोशिश कर रहा था, अब हटा दिया तुमने एकदम से, तो इट्स चीटिंग, इट्स नॉट फेयर. तो एनवायरमेंट डज नॉट केयर अबाउट यू. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू हैव टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट और यू विल पेरिश. सो मैं आपको ऐसे एग्जांपल इसीलिए देता हूँ इतने सारे, सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग्स. ओके. एक और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. यूपीएससी इज एन एनवायरनमेंट फॉर यू. ओके. whatever changes it made, you have to react to that changes. You have to either adapt to those changes or you will perish through those changes. अब ये जो है ये बहुत ही एक सिंपल चीज होती है, इसमें लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं. देखो इसका भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है. तो लेट से इंडिविजुअल लेवल पे मान लो अपना एक डॉग है, ठीक है? एक वुल्फ पकड़ लो, उसका नाम है वुल्फी, ठीक है? तो वुल्फी है, बढ़िया अच्छा खासा घूमता रहता है वाइल्ड में, बढ़िया चिल मारता है, कोई लोड नहीं है लाइफ में उसको. सो ये सबसे कॉमन यूनिट है, ठीक है? मतलब सबसे लोएस्ट कॉमन यूनिट है. ये हाईएस्ट यूनिट होती है बायोलॉजी में, बाय द वे. क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट होता है सेल से, फिर जाता है टिश्यू पे, टिश्यू से जाता है ऑर्गन पे, राइट? ऑर्गन से जाता है ऑर्गन सिस्टम पे, ऑर्गन सिस्टम से जाता है इंडिविजुअल पे, वुल्फी पे, राइट? समझ गए? अब यहाँ पे आ गया आपका वुल्फी. अब वुल्फी के कुछ भाई बहन होंगे, कुछ दोस्त यार होंगे, राइट? कुछ मम्मी पापा होंगे, कुछ बीवी बच्चे होंगे. सो मान लो कि उनका पैक है, और वहां पे और भी बहुत सारे पैक है, मान लो 1500 वुल्फ रहते हैं. तो ये तो हो गई वुल्फ की पॉपुलेशन, ठीक है? वुल्फी की जो पॉपुलेशन है उसमें वुल्फ होंगे, उसके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, बीवी बच्चे होंगे, समझ रहे हो? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. इट इज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ वुल्फ. पॉपुलेशन इज ओनली वुल्फ. उसके ऐसा नहीं होगा कि उसका दोस्त एक डॉग है तो वो भी आ जाएगा, नो. वो पॉपुलेशन में नहीं आएगा सर, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर. पॉपुलेशन इज ओनली वुल्फ, ओनली वन स्पीसीज. यहाँ पे आप वुल्फी को रोमन सैनी से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो पॉपुलेशन में आ जाएगा ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिटी. कम्युनिटी में अब वुल्फी कुछ डियर को मार के खाएगा, राइट? कुछ रैबिट मारेगा, राइट? कुछ उसको हाइनास और टाइगर्स और लायंस के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, राइट? सो डियर, रैबिट्स, हाइना, टाइगर, लॉयन, वुल्फ. सो ये उसकी कम्युनिटी बन गई एक, जहाँ पे और भी बहुत सारी स्पीसीज के साथ compete करेगा डेली बेसिस पे, राइट? कॉमन सेंस है ना?
आई होप आप समझ पा रहे होगे। फिर उसका एक इकोसिस्टम होगा। सो इकोसिस्टम इज लाइक इट कैन वेरी फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू अ पॉन्ड, समझ रहे हो? सो ड्रॉप ऑफ वाटर टू अ pond to a small forest, all these are ecosystem. Okay, and then wolfie will belong to a biome also, right? For example, it can belong to taiga biome. Okay, ह्यूमन के केस में भी कम्युनिटी वही होगी कि ह्यूमन बीइंग जिस भी ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस, राइट? चारों तरफ यू हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? So you can belong to various biomes like tundra, taiga, tropical rainforest. There are like different biomes. And finally, life interacts at hydrosphere, lithosphere, and biome पढ़ेंगे यार। biome specifically defined biomes होते हैं, tundra, taiga, tropical rainforest, etc. So when hydrosphere, lithosphere, and atmosphere interacts, it's called as biosphere, where life is possible. Is it absolutely clear? सो इंडिविजुअल लेवल पे वुल्फ है, पॉपुलेशन में 1500 वुल्फ हैं, कम्युनिटी में डियर, रैबिट, ओके, हाइना, टाइगर, लॉयन, वुल्फ सब आ जाते हैं। इकोसिस्टम कैन वेरी फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू अ पॉन्ड। एक ड्रॉप ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी एन इकोसिस्टम, ठीक है? तो इकोसिस्टम इज नॉट डिफाइंड बाय द साइज। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन नॉट बी ए बायोम, बट ecosystem can be inside a drop of a water. Is it absolutely clear? एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकती है। हाउ सर? तो बताऊंगा मैं आपको, बट जस्ट रिमेंबर वन स्मॉल पॉन्ड कैन बी एन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ, ऑलराइट? So you have individual organisms with their environment, followed by population, community, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। अरे भूलोगे तो नहीं ना जिंदगी में कभी? सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है वुल्फी इंडिविजुअल, राइट? फिर इंडिविजुअल के बाद आती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आती है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो बायोम में सब कुछ आ जाएगा, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। इकोसिस्टम में सब कुछ आ जाएगा, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। कम्युनिटी में सब कुछ आ जाएगा, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। पॉपुलेशन में सब कुछ आ जाएगा, इंडिविजुअल, ठीक है? सो दीज आर लाइक इंक्लूसिव थिंग्स। अलग से नहीं है कुछ कि इंडिविजुअल अलग है, पॉपुलेशन अलग है, कम्युनिटी अलग है, ठीक है? सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट। ज्यादातर लोग यहीं पे गिव अप हो जाता है उनका लाइफ से, और यही कॉन्सेप्ट वो समझते ही नहीं है जिंदगी भर, और वो एनवायरमेंट रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है? व्हाट इज अ टिश्यू? नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, ओके? बट दिस इज कंप्लीट बायोलॉजी एंड कंप्लीट एनवायरमेंट, ओके? सो इसके बियॉन्ड कुछ होता नहीं है, ठीक है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड बायोस्फीयर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? समझ रहे हो? तो सेल से बायोस्फीयर का पूरा रास्ता हमने 5 मिनट में तय कर लिया। सब कुछ इसी के अंदर आता है, उसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। Now, individual is the smallest unit. Is it clear? Smallest unit which has the ability to act or function independently. Population is always of the same species. Is it absolutely clear? Population is of the same species, same species, same species. Now, human beings की जो पूरी population है, that is not population, ठीक है? Population is in a defined area. For example, let's say population of human beings living in Jaipur, population of human beings living in Rajasthan, population of human beings living in Andaman and Nicobar Island, ठीक है? So it is in a defined area during a specific time frame. Communities are named after the dominant species, okay? So it depends on which dominant species is there, but it is clear if there is one dominant species, there will be other species also, right? अगर एक dominant species है उस community में, तो obviously other species भी होंगी. So individuals is the study of unit of study, okay? इससे छोटा यूनिट नहीं होता एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ऑलराइट? नो समीक्षा, वी आर नॉट अ कम्युनिटी. सो इट डिपेंड्स ऑन दिस स्टेटमेंट। इफ यू आर सेइंग, लेट्स से you as an unacademy learner are a part of a population, ठीक है? So right now hundreds of people are listening to me right now. So all of you are part of a population, ठीक है? You are not part of a community, because यहाँ पे
कुत्ते बिल्ली भैंस बकरी आपके साथ क्लास नहीं देख रहे हैं, अगर इफ यू हैव टू टेक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, ओके, but let us say as soon as you go out, then you can become part of a community, all right? Then you are interacting with your cow, your dog, your buffalo, okay, your goat, etc., your trees, okay. तो इंडिविजुअल इन इकोलॉजी हैबिटाट व्हाट इज नीश, some कुछ लोग उसको निच भी बोलते हैं, नीच नहीं है, ठीक है, वो बोलते हैं सर नीच नहीं समझ में आ रहा, नीच नीच नहीं है, ठीक है, इट्स निश, या फिर निच भी बोल सकते हो, बट ये नीच नहीं है. Adaptation, species, variation, theory of evolution, features, speciation, reasons for reproductive isolation, and finally, species undergo extinction. So again, I'm saying it is the basic unit of study. ये सब समझ में आ रहा है सर? जो कम्युनिटी आपके इंटरनेट की जो कम्युनिटीज होती हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, ये एनवायरनमेंट है, साइंस है, अब कुछ भी आप बोल दो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना. सी जो अखबारों में आता है वो इंग्लिश वर्ड होता है, आप समझ रहे हो? इंग्लिश में तो ये भी लिखते हैं कि यू आर माई ब्लड, इसका कोई मतलब नहीं होता, यू हैव अ वेरी यूनिक ब्लड, ओके. सो इट डजेंट मैटर, लाइक इट्स इंग्लिश, ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब अब जेल में हो तो सेल का कुछ और मतलब होगा, और अपना मोबाइल में हो तो सेल का कुछ और मतलब होगा, कार में कुछ और मतलब होगा, राइट? सो डिपेंड करता है ना, वो तो, ये तो बेकार से एग्जांपल है. साइंस साइंस साइंटिफिक कोई साइंटिस्ट बैठ के थोड़ी लिखता है आपका एडिटोरियल. So organisms of the similar type have potential for interbreeding. This is very very important. All right. So why are we a part of same species? Any one of you can marry, okay, and do interbreeding and produce fertile offsprings. All right. As long as this condition is satisfied, you are part of the human species. Is it absolutely clear? All the 7.7 billion human beings can marry each other, okay, and they have potential to produce fertile offspring. Is it clear? All of you can marry each other. It doesn't matter whether you are from Serbia or Siberia, okay. समझ में आ रहा है? It doesn't matter whether you are in Antarctica or Arctic. It doesn't matter whether you are in North America or South Asia. All right. All of you can marry each other and you can produce fertile offspring. So this is called as a species. ठीक है? Now let us assume that कल को मार्स पे हम चले जाते हैं और वहाँ कॉलोनी बन जाती है, ठीक है, और हम 500 साल या 1000 साल आइसोलेट रह जाते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि 1000 साल के बाद वी आर नॉट केपेबल ऑफ इंटरप्रिटिंग. इज इट क्लियर? ऐसा हो सकता है कि जो मार्स के ह्यूमन बींग्स हैं और जो अर्थ के ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ इंटरप्रिटिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ आइसोलेशन. So then there will be two separate species of human beings, and there is a good chance that we will start fighting amongst each other. All right, and we will lead to annihilation of one another. So an organism is fully adapted to its environment. It has a definite series of stages like birth, hatching, growth, maturity, senescence, aging, and death. Then you have competition, mutualism, predation. See, this death is not guaranteed. Okay, there are some organisms which are literally immortal in biology. मतलब literally they don't die. So this is like an exception. Sometimes there are some organisms which are immortal. Okay, can anyone give me some example? Trees कब से immortal होने लग गए? Trees तो मर जाते हैं ना. So there are some examples. Okay, so कोई देना चाहेगा तो बता दो. So lot of organisms are there. जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा is technically biologically immortal होता है. Is it absolutely clear? I don't know if you heard about hydra or not. So it is not possible for it to die. Some bacterias will always divide and it's impossible for them to die. Okay. Jellyfish जो होती है, unless you eat it, jellyfish is also capable of living for
almost infinite times. All right. Uh, so please remember this. So there are like different examples of immortal organisms. Is it clear? So they don't die in normal sense. Okay. Now what do you mean by habitat of an organism? आज से 10,000 साल पहले आप इमेजिन करो कि आप कहीं रुके हुए हो, तो आपके हैबिटाट में क्या होगा? स्पेस होगा, राइट? आपके वहां पे फूड होगा, राइट? आपको वाटर होगा, वहां पे शेल्टर होगा. These are the things which you will see, right? So physical environment in which an organism lives is called as an habitat. So these are the things which are covered in a habitat. You have a space, empty space around you. You have shelter or cover, not house. Is it clear? घर नहीं है, but shelter, cover, ऐसी चीजें हैं, ठीक है? It's not like house, but yeah. And food, water, etc. So habitats भी देखो कई तरह के होते हैं. एक तो होता है लैंड, ऑलराइट, तो उसको तो हमने बोल दिया टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. उसके अलावा होता है वाटर, और वाटर तीन तरह का होता है. एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है सलाइन वाटर, और एक होता है जहाँ पे बीच में वो मिल रहा होता है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सर? एक होता है नमकीन पानी, एक होता है मीठा पानी और एक होता है एस्चुरी जहाँ पे वो मिल रहा होता है. कॉमन सेंस सेज दैट दिस इज द लॉजिक टू स्टडी. ओके. So terrestrial freshwater estuarine where river meets the ocean and ocean. So Earth has four major habitats: terrestrial, freshwater, estuarine and ocean. ठीक है? भूलोगे तो नहीं? So land, freshwater, estuary and ocean. Now what is niche? नीच क्या होता है? कौन ये नीच है जो नीच हरकत कर रहा है? So let us discuss that. See, vulture has a very specific niche that it will basically take care of the dead bodies, right? It will ensure that dead bodies don't rot and it eats away the entire dead body, मोटा मोटा, और जो बचता है वो फिर बैक्टीरिया प्लस फंगस उसको डिग्रेड कर देते हैं, राइट? So vulture has a very typical niche in the okay, niche. So just remember that it is your occupation. समझ रहे हो? So doctors का एक niche होता है, right? That they have to treat the patients, right? Lawyers का एक niche होता है that they have to take care of legal cases, right? CA will take care of your accounts, right? Point समझ रहे हो? So they have their own specific roles. So it refers to the functions that a species perform in its habitat. So niche can be considered as occupation of the species, while habitat refers to the address of the species. Is it absolutely clear? ऑक्यूपेशन बता दिया ना, टिपिकल यार, एक वर्ड में बता तो दिया. सीए, लॉयर, डॉक्टर याद रख लेना, ऐसे कौन पढ़ाएगा? ऑक्यूपेशन ऑफ अ स्पीसीज. जैसे वल्चर की क्या ऑक्यूपेशन है कि जब सब कुछ हो जाए, उसका क्रियाक्रम हो जाए, तो उसको जाके उसके चिथड़े उड़ा देना है बॉडी के, राइट? उसका जो भी मीट वगैरह है वो पूरा उड़ा देगा, वो सिर्फ बोन्स वोन्स बचेंगी, स्किन वगैरह बचेगी. एंड दैट्स बेसिकली विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस. सो बैक्टीरिया और फंगस का भी एक नीश हो गया ना, that they will decompose the organisms, right? So I hope you are understanding. It's your occupation. अब आप कई बार देखोगे कि एक बिल्डिंग में you will find that it's very difficult for two big hospitals to survive right next to each other, right? अगर दो हॉस्पिटल है तो एक में बहुत 90% पेशेंट जाएंगे, दूसरे में 10%. सिमिलरली अगर दो हलवाई की दुकान खोल देते हैं, तो आप देखोगे एक ही हलवाई की दुकान पे 90% लोग समोसा कचौरी खरीद रहे हैं, और जब उसकी दुकान पे खत्म हो जाता है तो दूसरी दुकान पे जाते हैं, राइट? सो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग द सेम niche to survive together, right? हैबिटाट इज योर एड्रेस, निश इज योर ऑक्यूपेशन. कितनी बार समझाऊं? हैबिटाट इज योर एड्रेस, निश इज योर ऑक्यूपेशन. इतना भी लिख दिया और कैसे बताऊं मैं डिफरेंस? हैबिटाट का मतलब होता है आई लिव इन बैंगलोर, सो दैट्स माय हैबिटाट. व्हाट डू आई डू? आई रन एन एकेडमी, सो दैट्स माय निश. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सर आंख खोलो, अपनी ज्ञान चक्षु खोलो, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है हैबिटाट और निश का. So term includes relationship of the species which is used for its survival, reproduction, and every species has a unique niche. As I told you that same habitat में बहुत सारी species रह सकती हैं, but उनका niche usually अलग अलग होता है.
अगर दोनों का निश सेम हो जाता है तो फिर ज्यादा लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। सो वो यूजुअली सरवाइव नहीं कर पाती हैं उस केस में। समझ गए क्या सर? सो प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, वरना काफी लोड हो जाएगा लाइफ में आपको, ठीक है। So it's fairly important for you to study all these facts. So niche cannot be shared by two species, as sharing would lead to competition between the species. All right. Until one of the species get displaced. जैसे मैंने आपको बताया, दो हलवाई की दुकान बैक टू बैक नहीं चल पाती है, राइट। बिकॉज आप ज्यादातर क्या करोगे, आप एक ही हलवाई की समोसा कचौरी और मिठाई खाने लग जाओगे, दूसरे की नहीं खाओगे। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ निश। जो बेटर होगा वो काम करेगा। अब मान लो वल्चर के अलावा एक और नई स्पीसीज आ गई जो सेम काम कर रही है, सो आइदर वल्चर विल बी मोर एफिशिएंट और द अदर स्पीसीज विल बी मोर एफिशिएंट, राइट। जैसे ही कोई डेड बॉडी हुई तो वल्चर ने उसको साफ कर दिया, तो दूसरी स्पीसीज तो भूखी मर जाएगी ना फिर, इट विल नॉट बी एबल टू ईट एनीथिंग। if two species occupy the same niche, they will compete with one another until one of them is displaced. See, lion and leopard survive together is a different example. The area needs to be big enough for that. All right. So technically, they live in a separate habitat. So it has to have a big enough area. Do you understand? But even lion, tiger, they don't gel well together. आप समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे इंडिया में लायन भी मिलते हैं, टाइगर भी मिलते हैं, ये यूजलेस स्टेटमेंट है। इंडिया इज नॉट अ हैबिटाट। आई होप इट इज क्लियर कि सर इंडिया में तो स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं, इंडिया में तो सर लेपर्ड भी मिलते हैं, सर इंडिया में तो टाइगर भी मिलते हैं, सर इंडिया में तो लॉयन भी अरे इंडिया इंडिया कोई एनवायरनमेंट की स्टडी थोड़ी है। सो आई होप इट इज क्लियर। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर। आप पॉइंट समझ रहे हो कि उठते बैठते दिन रात बस आजू बाजू में खड़े हो। मैंने बताया सही, दो हलवाई की दुकान भी चल जाएंगी, 1-1 किलोमीटर दूर होंगी तो, राइट। आई एम सेइंग लिटरली नेक्स्ट टू ईच अदर। समझा करो यार एग्जाम्पल। एक सिटी में वैसे तो 100, 200, 300 आपको स्वीट शॉप मिल जाएंगी, राइट। ऐसा थोड़ी है 300 स्वीट शॉप सरवाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल करती हैं ऑब्वियसली करती हैं। हजारों स्वीट शॉप हो सकती हैं दिल्ली जैसी सिटी में, राइट। But literally next to each other, if you open, it becomes very difficult other unless you innovate or you have to change your shop address. Usually this happens, right? So you change your habitat. In that case you go somewhere else. So important resource in the niche are like food, shelter, moisture, nutrients, etc. So for example, two plants growing next to each other will find it very difficult to grow if they start two different species. So usually one of them will be replaced by another. So ये बस याद रख लेना, ठीक है। So this is like very very important. So please remember this. Now types of niche, like habitat niche, place where an organism lives is the habitat niche. Then you can have a food niche. So let's say आप सेम तरह का खाना खाते हो, ठीक है, आप सेम तरह का आप पढ़ाई करते हो, मान लो, समझ रहे हो। मान लो यूपीएससी इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। So limited food है, limited seats हैं, and if you are, let's say if you appear for SSC and someone is preparing for UPSC, then your niche are different, right। आप एक दूसरे से compete नहीं करोगे, बट आपको भी एप्पल पसंद है और दूसरी स्पीसीज को भी एप्पल पसंद है, तो यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, राइट, बिकॉज एप्पल आर लिमिटेड। अनलेस एप्पल आर अनलिमिटेड देन इट डजंट मैटर। then reproductive niche, so if the time of reproduction of organisms or mode of reproduction of the organisms clash, then also it can lead to huge issues, okay। Then you have physical and chemical niche, so it depends on like temperature, if you need the same things, etc, if you're competing. Now what is adaptation? It is a structure, behavior or mode of an organism which helps it to survive in its environment, so that is called as adaptation. All right. So what is adaptation? Structure, behavior, mode of an organism which will help it to survive in its environment. All right. Structure, behavior, or mode of an organism which helps it to survive in its environment. All right. It can be a structural change, it can be a behavioral change, or it can be a mode of an organism which helps you survive in an environment. For example, what is an example of structural change?
जैसे कैक्टस की लीव मॉडिफाई होकर स्पाइन बन जाती है सो दैट द ट्रांसपिरेटरी लॉसेस आर लो, एंड कैक्टस की स्टेम मॉडिफाई होकर ग्रीन बन जाती है सो दैट इट कैन अंडरगो क्लोरोफिल, इट हैज क्लोरोफिल एंड अंडरगो फोटोसिंथेसिस, एंड कैक्टस की रूट्स डीप हो जाती है सो दैट इट कैन सक द वाटर आउट ऑफ द लैंड. So that is a structural change. Now what do you mean by behavioral change? Behavioral change का मतलब होता है डेजर्ट की जो स्पीसीज होती हैं वो रात को बाहर निकलती हैं, कुछ स्पीसीज, ओके. स्नेक, स्कॉर्पियंस, वेरियस स्पीसीज ऑफ द डेजर्ट दे कम आउट इन द नाइट. सो उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया. तो दिन में तो वो क्या करते हैं, डेजर्ट के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर दबे हुए रहते हैं, स्नेक, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा. और रात को बाहर निकल के आ जाते हैं जब थोड़ी ठंड हो जाती है. डू यू अंडरस्टैंड? सो उन्होंने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया अपनी बॉडी का. उन्होंने ऐसे कोई एसी नहीं लगवा लिया अपने सर के ऊपर कि वो बाहर एसी चल रहा है बढ़िया. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ बिहेवियरल चेंज, राइट. कि उन्होंने अपना साइकिल चेंज कर दिया, वो ठंड में बाहर आते हैं, गर्मी में अंदर रहते हैं. Alright, so we will discuss more of these adaptations. Don't worry about this. And they don't happen in like 5-6 days in organisms. It takes tens to hundreds of years. Okay. So please remember this. Okay. So all kind of adaptation scenes in all organisms have evolved over the time, unless you are a human being. All right, we adapt very fast. So for example, let us say if you are in a desert, you will change your t-shirts, right? You will have an AC, right? You will have very cold water with you, so you can adapt very fast. So these are all environmental adaptation using technology. If UPSC tomorrow removes an optional, you will literally have 5 months to prepare, right? क्योंकि फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर में एग्जाम आ जाएगा, तब अगर 5-6 महीने, यू कांट से इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर यू टू अडेप्ट. ओके. सो प्लीज रिमेंबर दैट फैक्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. So adaptation of organisms survive have enabled them to survive. Gills in fishes, thick fur of animals in cold environment are typical examples. Let's see, do you know kangaroo rat in North America is capable of meeting 100% of its water requirement through internal fat oxidation? Do you understand this? तो नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में पानी मिलेगा ही नहीं उसको, तो वो क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से पानी जो बचता है उससे वो अपना पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो कल को उसको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए तो भी वो सरवाइव कर जाएगा. ऑलराइट. एंड इट विल हैव कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन कैमल, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. जैसे कैक्टस का एग्जांपल लेते हैं. वेरी थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस, समटाइम्स इट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन. Stomata are arranged in deep pits to minimize the water loss. So all these are like typical examples. Okay. So please remember this. Spines are modified to leave. Okay. So spines in case stomata are small openings which leads to transpiratory water losses. So leaves are modified into spines. Mammals देखे आपने cold climates में very very short limbs, very very short ears in order to minimize the heat loss. So that is typically seen in mammals. Then aquatic mammals in polar seas have thick layer of fat or blubber below their skin. So aquatic mammals have very thick layer of fat, very thick layer of blubber below their skin to reduce the heat loss. We experience altitude sickness. So for example, जब आप अगर मसूरी जाओगे कभी लवासना में, तो आपको ट्रैकिंग पे लेके जाएंगे. ऑल राइट. तो देखो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं होता इतना खास. ऑल राइट. बट अगर आपको एस्थमा वगैरह है तो जैसे आई वेंट टू 4-4.5 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है. 4-4.5 किलोमीटर अबव सी लेवल बोल रहा हूँ मैं, ASL बोलते हैं इसको. तो वहां पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी. ओके. जैसे आई हैव 15-16 हीमोग्लोबिन, तो उतना लोड नहीं था. बट मान लो आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको एस्थमा है, so it can create huge issues for you, right? Because there is lack of relative lack of oxygen at low atmospheric pressures. So body will adapt by increasing RBC production, decreasing the binding capacity of hemoglobin. It will increase your breathing rate, etc. ठीक है सर. So body will adapt by increasing RBC production, decreasing the binding capacity of hemoglobin, by increasing the breathing rate, etc. So your body will adapt. बट ऐसा नहीं होगा 5 मिनट में अडेप्ट कर जाएगी. इट विल टेक अ फ्यू डेज टू अडेप्ट. So biochemical adaptations. So like example, some microbes can live in hot springs.
And behavioral adaptation मैंने बताया ना, desert lizards, burrowing animals, so they can go inside the land if it's needed be. Now, what is a species? So, it is a group of similar organisms which are capable of interbreeding, producing offsprings. They are called as species. ये तो हो गई ना, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गई ना, आपका आरबीसी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन, एनीथिंग रिलेटेड टू फिजियोलॉजी इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. तो जैसे आरबीसी आपका बढ़ गया, ओके. Every species has a unique genetic characteristic which makes it distinct. So they are capable of interbreeding, producing organism. All right. So interbreeding and reproduction is possible only for organism belonging to the same species. Is this a correct statement? Technically speaking, answer is no. All right. वरना कभी म्यूल पैदा ही नहीं होंगे, राइट. तो जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स इंटरब्रीड करते हैं, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स जब इंटरब्रीड करते हैं तो म्यूल बनता है, राइट. But technically speaking, this is correct also, all right, because it talks about fertile offsprings. Is it clear? So if you remember my definition जो हमने डिस्कस करी थी, so we were talking about fertile offsprings, all right. So that is very very important, which you have to understand. Okay, so they have to produce fertile offsprings, all right. And mule is not fertile, so it will not count. I hope this part is absolutely clear. Okay, so they have to have fertile offsprings. So that is technically correct. Tiger and lion also can form lot of other organisms, like tiglion hota hai, alright, liger hota hai. So these are also possible, but they don't reproduce further, and they are very unfit organisms. Alright, I have seen these. I have seen one liger. बिल्कुल ऐसा राक्षस की तरह लगता है. It's huge. Can't run properly. It's not fit for the world. Okay, it will not be able to hunt at all. So variation in species, there are different populations within a species, so they can interbreed with each other, and variations occur due to chance mutation. So survival will depend on competition, natural selection, etc. And variations which help a species adapt to its environment are promoted, obviously, like color of skin, hair. These are all variations, right? जैसे ह्यूमन बींग्स की स्किन का कलर बहुत वेरी करता है, किसी का वाइट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. हेयर में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट. यू विल फाइंड ब्लॉन्ड, यू विल फाइंड ब्रूनेट, यू विल फाइंड ब्लैक, यू विल फाइंड रेड, राइट. सो ऑल दीज आर नेचुरल कलर्स. अब ऑब्वियसली आप पर्पल भी करा सकते हो, बट आई एम टॉकिंग नेचुरल कलर्स. Now there are differences among animals like dogs, cats, cows, etc. So plant belonging to the same species shows variation in the size and color of the fruit they bear. Now let's talk about theory of evolution. So what is this theory of evolution? So Charles Darwin, Alfred Wallace proposed this theory of evolution, which was also the neo-Darwinism later on. So this you can remember. So very very important. Okay. So this is theory of evolution. So what is this theory of evolution? So they say variations arises over a period of time, and they vary from everything, not only among themselves but also from their ancestors. Most of the species go extinct, and those who are able to survive in the changing environment, that leads to, okay, so that basically leads to survival of the fittest. Okay, so ये बस याद रख लेना. So this is very very important. So there are like changes, built-in variations, etc. Some of these will enable them to survive better in natural conditions. Some of them, those who can survive better in natural conditions, they will outbreed the others. Okay, so they will outbreed the others. So that's how it works. What is natural selection? The essence of Darwinian theory is natural selection. So rate of appearance of new forms is linked to life cycle or the lifespan. So how does natural selection works?
So whoever is basically very well suited to the environment, so they will get naturally selected, isn't it? So for example, let us say if I am a good predator, so then if I can hunt better, then I will 100% survive. Is it absolutely clear? So I will 100% survive. Please remember that. Okay. I will make sure that other predators don't survive if I am better than them. So please remember that other species will go extinct or they will reduce in numbers drastically. So for example, microbes which are the fast, like which can divide very fast, they can multiply, they can become millions of individuals very very fast. Okay. So please remember that. So in due course of time, this variant population will outgrow the others that will appear as a new species. Okay. So please remember that. Is it clear? So जो better है, मान लो कि मेरे सर पे कुछ ऐसा आ जाता है आज, मान लो कि if I develop some unique characteristics and using that basically I can be better. And let's say there are hundreds of such human beings, जैसे मैंने मार्स का एग्जांपल दिया ना आपको, so I can become very well suited for Mars life, and I can change myself, and over hundreds of years, over thousands of years, or over millions of years, I can develop into a new species. Is it clear? So please remember that fact. Okay. So ये याद रख लेना आप, ठीक है? So fitness is based on characteristics. So there has to be a genetic basis for getting selected and to evolve. अगर आपने अपने हाथ पे टैटू बनवा लिया, तो आपके बेटे या बेटी के हाथ पे थोड़ी टैटू आएगा, राइट? या आपने मान लो यूपीएससी की तैयारी करी, तो उनके पास थोड़ी चला जाएगा वो सारा नॉलेज। या आप डॉक्टर बन गए तो वो डॉक्टर थोड़ी बन जाएंगे, या आप क्रिकेटर हो तो वो क्रिकेटर थोड़ी बन जाएंगे। डू अंडरस्टैंड? आपने चेंज किया, आपने अडेप्ट किया, बट देर इज नो जेनेटिक बेसिस फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू गेट ट्रांसफर्ड। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? आपके ओवम में या आपके एग में या फिर आपके स्पर्म में ये सब स्टोर थोड़ी होगा जो आप पढ़ाई कर रहे हो। But let us say over a hundreds of years, you can be more tall, you can have more muscle mass, your heart can be bigger, your brain can be bigger, right? All these are genetic changes which will get transmitted to your babies through you. So some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. So adaptive ability is inherited. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. So these are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. All right. So branching descent, natural selection, etc. Okay. So now is evolution a process or the result of a process? How many of you can tell me the answer? Is it a process or evolution is a result of the process? Okay. So we'll discuss it. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट, राइट? आपने देखा होगा कुछ जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनके 7 बच्चे होते हैं, राइट? 7 8 काफी इजीली देखा होगा। बट अगर आप देखोगे वहां पे 1 महीने बाद जाके, तो सिर्फ 4 5 ही सर्वाइव करते हैं, राइट? सो ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस मोर। अरे आप डॉग्स की एग्जांपल ले रहे हो, आज से 100 साल पहले चले जाओ या 200 साल पहले चले जाओ, स्वीडन में चले जाओ, नॉर्वे में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, women used to have 7 to 8 children. Do you know this? And only 2 to 3 used to survive till adulthood. क्या डॉग्स की बात कर रहे हैं हम? इंडिया में आज से 40 साल पहले चले जाओ, forget about everything else. India 40 years ago was exactly like this. The women used to produce 5 to 6 children, right? At least average बता रहा हूँ, कुछ केसेस में तो 9 10 11 भी मिलेंगे आपको, right? And out of this 9 11 you will find like 3 or 4 of them surviving till adulthood, right? So organisms always tend to produce more offspring that can be supported by the environment. Okay. So mutation, meiosis, fertilization. So in sexually reproductive organism will produce new combination of genes, so which is termed as recombination. So variation is present in members of the same species, and they are not exactly identical. Okay. And these variations are also, you can inherit them, so they are heritable. Okay. Is it absolutely clear? So variations are heritable through your genetics, through your sperm, through your egg.
Okay, so please remember that. Okay, very very important. Okay, so natural selection is an evolutionary force which select among variations. So genes which help the organism to adapt to its environment. Okay, identical twins happens once the zygote splits. So that is a rare case. So please remember this. Then evolution results in adaptation and diversity of the species. And there are two process which forms the species or make sure the species go extinct. The first process is called as speciation. जैसे मैंने example दिया मार्स का आपको, तो same ऑस्ट्रेलिया भी है, right? ऑस्ट्रेलिया is nothing but Mars, because you cannot go to Australia and last time you cannot go to Mars also. For example, Madagascar, right? Could you go to Australia like 10,000 years ago? It was very difficult to go to Australia 10,000 years ago, right? You will not have ships and everything. So Australia, Madagascar, so they have their own unique species. Have you seen it? Any island community like Andaman and Nicobar Island, अब तो खैर pollute कर दिया हमने जा जाके. But this type, for example, let's say Mauritius में एक bird होता था. Do you know dodo? Have you heard about this bird called as dodo? So Mauritius used to have this bird, but when human beings went there for the first time, it went into extinct. Okay, so please remember that. Okay, so speciation is a process by which new species are formed. It is different from evolution. Geographical isolation is the number one thing. So what is common between these things? What is common in, let's say, Australia, Madagascar, Mauritius? All of them have different species. Okay, so all of them have different landmass and they are isolated. So what are the reasons for reproductive isolation? So these are the different examples why it happens. Then extinction, then population. We will cover this in the next class. So what is a population? The population is of a particular species like density, birth rate, death rate, dispersal, age distribution. What is density? What is birth rate? What is death rate? What is dispersal? Right? What is age distribution? Sex ratio? What is biotic potential? Population growth? So ये एनसीईआरटी के कुछ टर्म्स है. So realistically exponential growth नहीं होती है, वो ये वाली growth होती है. So population, time, size, carrying capacity, etc. So carrying capacity is the limit beyond which a habitat cannot provide resources to support growth of a population. So that is called as a carrying capacity. Yeah, we have a class tonight at 10:30 p.m. So then you have community. So many populations have different kinds of organisms which share the same environment. So organisms which survive in an environment, they have adaptations, variations, etc. Okay, so this is very very important. Then you have stratification. Okay, then you have species diversity. Then you have ecosystem, biome, biosphere. We will discuss all this. So ecosystem is basically community of organisms with their physical environment. Is it clear? So it is a community of the organisms along with the physical environment or the abiotic things. So if you add community plus abiotic, that becomes ecosystem. Okay? So obviously it will include living and non-living both. Okay. So it will include living and non-living both. So ये आप एक example याद रख लेना. Okay. So just remember this. So all organism in an ecosystem is dependent on all other species. So damage or destruction on one part of ecosystem will have the impact on another part. So ecosystem can be a single tree. Is it absolutely clear? So ecosystem can be a single tree also, and ecosystem can be a single drop of water also. So a lot of students confuse ecosystem with biome. So that is a wrong confusion. Never do that confusion. Is it absolutely clear? So single tree can also be an ecosystem. Biomes, biosphere. So hydrosphere, lithosphere, atmosphere interacts to form biosphere. Then there is something called as ecological succession, primary succession, secondary succession, serial community. So just go through them, and these are the various interactions. I'll cover that in next class also. So commensalism, predation, parasitism. So just go through the PDF. You can download on your own. And yeah, so this was the like the literal basics of environment and ecology, and this was very very important for you to grasp it. Okay.
So thank you and have an awesome day. I'll meet you tonight at 10:30 p.m.